કહું છું મારો મેઇલ ખોલો, એમાં રિપોર્ટ હશે મારો, એમાં આવ્યું. Okay, we are live on YouTube. Atul bhai, you can just start. You start the recording also. Yes, ji. Please go ahead, Atul bhai. Yes. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ઉત્કલ ફેડરેશન, યુપી ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન આપણે ફક્ત આપણા માટે જ નહીં, બીજાઓ માટે પણ જીવીએ છીએ ના વક્તા મિતાલિનીજી, રાજેશ્વરીબેન, આભાજી તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. હવે હું કેશોરબેનને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજની સભાની શરૂઆત વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવે. કેશોરબેન, આપનું સ્વાગત છે. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. Know he is also one with every other. No, he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. કેશોરબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું શ્રી તરલભાઈ મુનશીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજની સભાની શરૂઆત કરાવે. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. હાજી હાજી. नमस्कार सभी को, और आप सभी का स्वागत है. जिन लोगों के मैं निवेदन करूंगा अर्चना जी उसको म्यूट करें. धन्यवाद. और अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं. मितालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप हमेशा ही एक बढ़िया विषय लेकर आती है, और आज जो विषय लेके आती है वो तो मेरे ख्याल से हर थियोसॉफिस्ट को ही नहीं, हर मानव को उसे चरित्रार्थ करना चाहिए. मितालिनी जी का संक्षिप्त परिचय देती. वे थियोसॉफिकल सोसाइटी उन्होंने ज्वाइन की 1991 में, तो सिद्धार्थ लॉज भुवनेश्वर. जस्ट अ मिनट, शायद कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है. या जस्ट अ मिनट प्लीज, छोटा सा टेक्निकल है. अर्चना जी, बाकी सब लोग म्यूट है ना? सब म्यूट है सर. या तो उन्होंने 1991 में सिद्धार्थ लॉज भुवनेश्वर में ज्वाइन किया. वो सेक्रेटरी रही उस लॉज की करीब 10 वर्ष तक. शी वाज आल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उत्कल थियोसॉफिकल फेडरेशन फ्रॉम 2017 to 2019, and now I think she is the president of Utkal Federation. She is also a secretary of Mahadadi's Nilachal TOS Group Puri, as well as president of Siddharth Lodge Bhubaneswar. उनकी मेन जो एक्टिविटी है वो बहुत ही थियोसॉफिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शी वर्क्स टू पॉपुलराइज थियोसॉफी अमंग्स द यंग स्टूडेंट्स, एंड शी आल्सो रन्स अ लेडीज हॉस्टल. शी हैज बीन टीचिंग अमंग द स्टूडेंट्स आल्सो. शी हैज कोऑर्डिनेटेड वेरियस यूथ कैंप्स, और बहुत सारे स्टूडेंट के टीएस के प्रोग्राम लिए हैं उन्होंने अलग अलग शहरों में, और अपने हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में भी वो बहुत ही एक तरह से इंस्ट्रूमेंटल रही हैं पाइथागोरस यूथ लॉज को बनाने में, उसका निर्माण करने में. और बहुत ही अलग अलग भाग ओडिशा के जो हैं और इंडिया के उन्होंने लेक्चर और स्टडी क्लास दिए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि मितालिनी जी चाहे इंग्लिश में बोले, चाहे अपनी उड़िया भाषा में बोले या हिंदी में बोले, तीनों भाषाओं में वो बहुत ही अच्छे तरह से सामने वक्ताओं को अपने विषय को धारण करवा देती हैं, न सिर्फ समझा देती हैं.
और इस वक्त वो महात्मा लेटर्स की क्लासेस में भी व्यस्त है। आइए मितालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्लीज गो। Namaste to all. Is it audible? Clear? Yes, yes. Namaste to all. Thank you, Taralji, Archanaji, and all members of Reva, Rohit, and Jyotilaj for giving me the opportunity to share my thoughts. My topic is to live not only for ourselves, but for others. But really, in Mahatma letter, Mahatma says, we live not for ourselves, but for others. But for general mass or us, for whole humanity, I add a word, that is only. We live not only for ourselves, but for others. First, we start or we try our program to begin with Guru Vandana. Om Akannamandalakaram Vyaktam Jena Characharam Tatpadadarshitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Gurur Brahma Gurur Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namah. Sarvasruti Siroratna Virajita Padmabhuja Vedantam Bhuja Suroyo Tasmai Sri Gurave Namah. Chaitanya Saswata Santa Yamatita Niranyana Bindunada Kalatita Tasmai Sri Gurave Namah. Jana Sakti Samarudha Tattvamala Vibhusita Bhukti Mukti Pradashta Tasmai Sri Gurave Namah. Tasmai Sri Gurave Namah. Why Mahatma says we live not for ourselves but for others? First, we try to understand this statement of Mahatma. How far it is true? We all know Mahatma is a self-realized person. He is free from birth and death. He has reached the summit of human evolution, level of an asceta, for whom there is nothing to gain or learn in the three worlds, in whom
There is no thirst for experience. He has liquidated all his karma and is under no compulsion to take birth. He therefore a liberated being or Jivan Mukta. The power of Mahatma are indeed many and wonderful, for they all follow in natural sequence from faculties which we ourselves possess. It is only that they have these faculties in a very much greater degree. The outstanding characteristic of Mahatma as compared with ourselves is that he looks upon everything from an absolutely different point of view. For there is in him nothing whatever of the thought of self, which is so prominent in the majority of man. Mahatma has eliminated the lower self and is living not for the self but for all. He realized all is truly himself. He has reached that state in which there is no flaw in his character, nothing of a thought or feeling or a personal separate self, and his only motive is of helping forward evolution, of working in harmony with the Logos. The most prominent characteristic is his all-round development. We are all of us imperfect. None has attained the highest level in any line. And even the great scientist or the saint has usually reached his excellence in one thing only, and other sides of his nature not yet unfolded. All of us possess some germ of all the different characteristics, but always they are but partially outed. Mahatma, however, is an all-round man, a man whose devotion, love, sympathy, compassion are perfect. All this same time, his intellect is something far grander than we. We can add it, but we can not realize the power of the Mahatma. His spirituality is wonderful and divine. He stands out above and beyond all men whom we know because of the fact that he is fully developed. Those who are attaining the level of adeptship choose as their future career to remain upon this world and help directly in the evolution of their own humanity. Find it convenient for their work to retain physical bodies. In order to be suitable for their purposes, the bodies must be of no ordinary kind. Our bodies grow old and die for various reasons. Some inherited weaknesses, diseases, accidents, self-indulgence, worry, and overwork. But
In case of Mahatma, none of these causes is present. So he always looks young, energetic, beautiful, and safe. Not only the physical body of the Mahatma, but all the bodies of the Mahatma are pure and purified. His consciousness is centered in a higher plane, but acts on various planes of existence. He is omnipresent, omniscient, and omnipotent. He surrenders self-will in conscious unity with the one will, contributes to Mahatma's omnipotence. Mahatma's wisdom and love are developed through omnipresence. He is omniscient. His mind does not necessarily contain all knowledge, but he has access to it. His mind is one with the universal mind. In order to acquire further knowledge, he has no more to go through a process of investigation and comparison of various objects. What is accorded an instantaneous, implicit insight into every past truth. The Mahatmas has developed all siddhi there to travel in superphysical body, to project and use consciousness at superphysical level without leaving the physical body, to materialize a replica of the physical body. From Mahatma letter we know all this, how Mahatma helped their disciples, their sincere workers, using his physical body, astral body, and giving thought to communicate mentally over the entire earth and solar system according to the degree of his development. Simply to shed light in the mind of men from all the points, from all the above points, it is true that Mahatma lives not for himself, but for others. Mahatma Lord Buddha says, we live in the world until and unless whole the humanity will not get their salvation. So Mahatma lives only for others, for whole humanity, for their evolution, spiritual evolution. But we human beings, we have our karmic link. Our bodies are not perfect. Bodies have their desires. We have trouble, tension, problem, worry, disease, many things. We had also due to our family, to our relative and others. We had also limitation. We are ignorant. We do not know many things. Laws of nature. We have no knowledge about this. Mahatma, like Mahatma, we cannot spend 100% of our life for others. But we can live not only for ourselves, but for others. Because we all come from one source and one life principle lies in everyone. That's why our universal prayer, we recite, O hidden light, vibrant in every
atom. We see that's why to have, so it is our nature to have, it is our nature to love, to give and to help. It is our real nature. We see many of our leaders, freedom fighters, social reformers, teachers, doctors, officers sacrifice their comfort, time, energy, family, even life for others. We all know the sacrificing nature of Madam Blavatsky, Colonel Olcott, Dr. Anibesan, Bishop Leadbeater. Blavatsky belonged to a royal family. But when her teacher asked her, would you like to marry and live a comfortable life or help us in our work? Without a second, Madam Blavatsky agreed to help in Mahatma's work, in her master's work. To popularize theosophy, she sacrificed everything. She worked hard and spent whole of her life for the humanity. She bore everything cheerfully because she forgotten herself or non-self while working for others. About Colonel Olcott, Mahatma says, we can trust him under all circumstances, who esteem the sacrifice of comfort and even life something to be cheerfully reached. Whenever necessary, who will eat any food or even go without, sleep on any bed, work in any place, fraternize with any outcast, endure any privation for the cause. From this statement, we came to know the sacrifice of Colonel Olcott. We know Mother Teresa saved the poor and diseased people. Because she was the real devotee of Jesus. She was the real devotee of Jesus Christ. She saw Lord in every people and served the humanity wholeheartedly. Ramakrishna Paramahansa, Sri Aurobindo, Swami Vivekananda, Raman Maharshi, all these spiritual teachers, they live not for themselves, but for others. Mahatma Gandhi, Dr. Abdul Kalam, and many philanthropists live not for themselves, but for others. We see in professions, IT professors, teachers, and government doctors left their job in order to help the needy others. They are going to the undeveloped, uncivilized areas, live with them, and serve without any expectation. One lady doctor, Bhakti Devi, unselfishly served the poor patient. She has done 70,000 free deliveries and 1,50,000 free operations. For her unselfish and sincere work, she got Padma Shri Award. During COVID-19, we
we came to know the service of many doctors, nurses, scientists, and many types of volunteers. They sacrificed everything, even their life, to serve others. Then we will start our next part. So 3 minutes are left. If you would like to point out 1, 2, 3, 4 points which there are 3 minutes still there. If you wish, you can go ahead for the part 1. But if it is over, I will call Rajeshwari. Unmute करो. Rajeshwari ji, unmute yourself, please. Good evening to everybody. Good evening. Mahapatra madam, good evening. Thank you very much. હવે હું મારું વક્તવ્ય ચાલુ કરીશ. આપણું હેડિંગ છે Rajeshwari ji, let me give your introduction, please. Yes, bear with me. Yeah. राजेश्वरी जी का परिचय देना बहुत जरूरी इसलिए भी है कि वे बड़ौदा में स्थित हैं, लेकिन उन्होंने लगभग 35 वर्ष अपने अध्यापन में गुजारे हैं। वे न सिर्फ पढ़ाती थी, शिक्षिका थी, बल्कि प्रिंसिपल भी थी यहाँ पर गोखलेबाई स्कूल की, और जूनियर कॉलेज मुंबई में उन्होंने पढ़ाया है गोखलेबाई स्कूल के। काफी सारे लेक्चर्स उन्होंने दिए हैं और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुई इस वक्त बड़ौदा में कार्यरत हैं और बहुत ही अच्छी तरह से थियोसॉफी का प्रचार प्रसार कर रही है। आपका स्वागत है राजेश्वरी जी, प्लीज गो अहेड। आपके पास 10+2 12 मिनट का समय है। આજનું આપણું હેડિંગ છે, શીર્ષક છે, આપણે ફક્ત આપણા માટે જ નહીં બીજાઓ માટે પણ જીવીએ છીએ. જો લાઈવ હોત તો હું બધા પાસે ક્લેપિંગની આશા એટલા માટે રાખત કે આપણા માટે એક્ઝામ્પલ તરલભાઈ છે, જે બીજા બધા માટે થઈને આટલું બધું કામ કરી રહ્યા છે. એને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન તરલભાઈ અને અર્ચનાબેનને. મહાપાત્રા બેને જે કહ્યું ભાગ પહેલામાં, એમણે કહ્યું કે મહાત્માઓ જે છે, મહાન આત્માઓ છે, તેઓ એમના એક પત્રમાં કહે છે કે આપણે ફક્ત આપણા માટે જ નથી જીવતા, આપણે બીજાઓ માટે પણ જીવીએ છીએ. તો એમાં એટલું ઉમેરવાનું કે આપણે કેવળ આપણા માટે જ નથી જીવતા, પરંતુ બીજાઓ માટે પણ જીવીએ છીએ. એમને પહેલા પોઈન્ટમાં કીધું કે ગુરુ વંદના કરીને એમણે પોતાનું વક્તવ્ય શરૂ કર્યું અને કહ્યું કે આપણે અહીંયા આપણો જે જન્મ થયો છે એ બીજાઓ માટે જીવવા માટે થયો છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મહાન આત્માઓ એક અસ્તિત્વ છે. તે એવી વ્યક્તિઓ છે કે જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયો છે અને તે જીવન તથા મૃત્યુથી મુક્ત છે. કારણ કે એક એવા સ્તરે એ લોકો પહોંચી ગયા છે કે જ્યાં ત્રણેય લોકમાં તેઓને હવે કશું જ પ્રાપ્ત કરવાનું શેષ રહેતું નથી, અથવા તો કે કંઈ પણ શીખવાનું બાકી રહેતું નથી અને કોઈ પણ અનુભવ મેળવવાની તૃષ્ણા નથી. સંતુષ્ટ છે તેઓ. તેમના સઘળા કર્મોનો ક્ષય થયો ગયો હોય છે અને ફરીવાર તેમને જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં આવવું પડતું નથી. તેમની વ્યક્તિગત ચેતના સાથે પરમ ચેતના સાથે ભળી ગઈ હોય છે અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત હોય છે. તેઓ પરમના કૃપાપાત્ર હોય છે, પરંતુ આ મહાત્માઓ સમગ્ર માનવજાતને મદદરૂપ થવા માટે આ પૃથ્વી પર જીવન ગાળી રહ્યા છે. ભગવાન બુદ્ધ શું કહે છે? જ્યાં સુધી મારા બધા જ બંધુઓ મુક્તિ નહીં મેળવી લે ત્યાં સુધી આ ધરતી પરથી જઈશ નહીં. એટલે જન્મ મહાત્માઓ લીધા કરે છે. એ લોકોએ પોતાના કર્મોના ફળ ભોગવી લીધા હોવાથી વ્યક્તિગત લાગણીઓ, ઈચ્છાઓ, ચિંતાઓ, માનસિક તાણ વગેરે તેઓને હોતા નથી. તેઓના શરીરો પરિશુદ્ધ હોય છે અને ચેતના ઉચ્ચ અવસ્થામાં વિહરતી હોય છે. તેમના અસ્તિત્વની વિવિધ અવસ્થાઓ કાર્યરત હોય છે, તેથી તેઓ પોતાને માટે નહીં પણ બીજા માટે જ જીવતા હોય છે. તેમનો બીજો પોઈન્ટ એવો હતો કે અસ્તિત્વના ઉદ્ભવ સમયે દરેક સર્જકનું આગવું મહત્વ હોય છે. મહાત્માઓ કહે છે દરેક ક્ષેત્રમાં તેની ઉપયોગિતા જોવા મળે છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે નાના નાના જીવજંતુઓ પણ
એક્ઝામ્પલ અળસિયું, એ પણ પોતાની માટે નહીં પણ બીજાઓ માટે જીવે છે. તેઓ આપણને જુદી જુદી રીતે સહાય કરે છે. તેમના વગર આપણે ન જીવી શકીએ. એક આખું સાયકલ છે ઇકોલોજી પર. COVID-19 ના સમય દરમિયાન આપણને ઓક્સિજનનું મહત્વ સમજાયું. એ સાથે છોડ અને વૃક્ષ જે આપણને નિઃશુલ્ક ફ્રી મળે છે તેનું પણ મહત્વ સમજાયું. આપણે માનવીઓ પણ કેવળ પોતાને માટે જીવીએ એવું નથી, પણ બીજાને માટે પણ જીવીએ છીએ. આ બીજાઓ કોણ? માતા પિતા, સંતાનો, પત્ની, સગાવાલા, મિત્રો, પાડોશીઓ અને બીજા બધા જીવોનો. આપણે સૌ એક જ છીએ. આપણી ભીતર એક જ જીવનનો સિદ્ધાંત છે. આમ આપો અને મદદ કરવી, આપો અને મદદ કરો, એ જ આપણી સાચી પ્રકૃતિ છે. આપણામાંના ઘણા નેતાઓ, સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ, શિક્ષકો, ડોક્ટર્સ, અધિકારીઓ ને જોઈએ છીએ કે જેઓ પોતાના સુખ સગવડ ત્યાગી પોતાનો સમય, શક્તિ, પરિવાર અને પોતાનું જીવન સુદ્ધા પણ સમાજને આપી દીધું છે. મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી, કર્નલ આલ્કોટ, ડોક્ટર એની બેસન્ટ અને બિશપ લેડબીટરના બલિદાન અને ત્યાગની ભાવનાઓથી તો આપણે સૌ અવગત છીએ. એક શિક્ષકે જ્યારે મેડમને પૂછ્યું, મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીને, કે શું તમે લગ્ન કરીને સુખ સગવડ વાળું જીવન જીવવા ઈચ્છો છો કે પછી અમારા કાર્યમાં મદદરૂપ થવા ઈચ્છો છો? ત્યારે તેઓએ એક ક્ષણનો પણ વિચાર કર્યા વગર માસ્ટર્સના કાર્યમાં મદદ કરવા તૈયાર થઈ ગયા. થિયોસોફીને લોકપ્રિય બનાવવા માટે તેમણે બધી જ વસ્તુઓનો ત્યાગ કર્યો, સખત મહેનત કરી અને માનવજાત માટે પોતાનું સમગ્ર જીવન વિતાવ્યું. બીજાઓને મદદ કરવામાં ઘણીવાર તેઓ પોતાની જાતને પણ ભૂલી જાય. કર્નલ ઓલ્કોટના ત્યાગની વાત પણ મહાત્માઓ કહે છે. ત્યાગનો આદર કરવો જોઈએ. જ્યારે જરૂરી જણાય ત્યારે પોતાના જીવની પણ પરવા કર્યા વગર કાર્ય કરવા તૈયાર થઈ જાય. તેમને ભોજન મળે કે નહીં, ભૂખ્યા પણ સૂઈ જાય, ગમે તે જગ્યાએ તેઓ કામ કરે છે. કામની સુખ સગવડતાને ધ્યાન દેતા નથી, ફક્ત કામ જ એમનો સિદ્ધાંત છે. દરેકની સાથે ભાઈચારો રાખે છે. થિયોસોફીનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે દરેકની સાથે ભાઈચારો. બહિષ્કૃત લોકોને, દલિત લોકોને પણ મદદ કરવા તેઓ હંમેશા તત્પર રહે છે. આ બધી મહાત્માઓની ક્વોલિટી છે. એ બધા માટે તેઓ પોતાની અંગત જરૂરિયાતોને પણ જતી કરે છે. વેરી ગુડ એક્ઝામ્પલ મધર ટેરેસા. મધર ટેરેસાએ ગરીબ અને બીમાર લોકોની સેવા કરી. તેઓ ઈસુ ખ્રિસ્તના સાચા ભક્ત હતા. તેઓને દરેક વ્યક્તિમાં ઈશ્વરના દર્શન કરતા અને ખૂબ સ્નેહ પ્રેમથી સમગ્ર માનવજાતની સેવા કરી. પણ આ બધું તેઓ કઈ પણ જાતની સભાનતા વગર કરતા. એમને એવું નહોતું કે હું કોઈની સેવા કરું છું, હું ગરીબોની સેવા કરું છું, એવી કોઈ પણ જાતની સભાનતા કેવી છે કે કોન્શિયસનેસ એવી એમને ન હતી. એવો બહુ સહજ ભાવે આ કામ કરતા. રામકૃષ્ણ પરમહંસ, શ્રી અરવિંદ રમણ મહર્ષિ જેવા આધ્યાત્મિક ગુરુજનો અને મહાત્મા ગાંધી, ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ તથા બીજા ઘણા પરોપકારી લોકો પોતાને માટે નહીં પણ બીજા માટે છે. ત્રીજા પોઈન્ટમાં એમણે એવી વાત કરી કે આઈઆઈટીના પ્રોફેસર્સ, ટીચર્સ અને સરકારી ડોક્ટરો પણ પોતાનો જોબ, પોતાની કમાણી છોડીને જરૂરિયાતવાળા ભાઈઓને મદદ કરે છે, જેના અસંખ્ય દાખલાઓ છે. કોઈને ખબર પણ ન હોય એવા પણ દાખલાઓ છે. તેઓ અવિકસિત અને અસંસ્કૃત, અનસિવિલાઇઝ ક્ષેત્રોમાં એટલે કે આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં જાય છે, ત્યાં તેમની સાથે રહે છે અને કોઈ પણ અપેક્ષા વગર, કોઈ પણ જાતની આશા કે ઈચ્છા વગર તેઓની સેવા કરે છે અને સહાય કરે છે. આ લોકો પણ મહાત્મા જ છે. આપણા મહિલા ડોક્ટર ભક્તિ દેવી નિસ્વાર્થ ભાવે ગરીબ દર્દીઓની સેવા કરે છે. તેમણે 70,000 ફ્રી ડિલિવરી કરી છે અને 1.5 લાખ જેટલા ઓપરેશનો એક પણ પૈસો લીધા વગર થયા છે. તેમની આ નિસ્વાર્થ સેવા બદલ તેમને પદ્મશ્રીનો એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો છે. COVID-19 આપણા સૌ માટે બહુ જ શીખવા જેવી વાત બની છે. આમાં આપણને ખબર પડી છે કે અનેક ડોક્ટર્સ, અનેક વૈજ્ઞાનિકો, નર્સ અને ઘણા સ્વયંસેવકોએ અને સામાજિક કાર્યકરોએ પોતાના જીવની પણ પરવાર કર્યા વગર લોકોની સેવા કરી છે અને નિસ્વાર્થ ભાવે પોતાના જીવનું બલિદાન આપ્યું છે. પહેલા ભાગમાં મહાપાત્રા બેને આટલી વાત કરી છે. હવે પછી બીજા ભાગમાં આપણે જોઈશું. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. एकदम सटीक टाइम पर आपने पूरा किया राजेश्वरी जी.
और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अभी आभा जी को, जो स्पॉटलाइट में है, और उनका भी एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। आभा जयमन जी संस्कृत की शिक्षिका हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सितारिस्ट हैं और योगा वेलनेस कोच भी हैं, साथ ही में स्पिरिचुअल सीकर हैं। वैसे वो दिल्ली को बिलोंग करती है पर इस वक्त अहमदाबाद में है, और बहुत ही जल्द उनके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, और बहुत जल्द वो थियोसॉफी भी ज्वाइन करने वाली है। आज त्रिवेणी की लगातार वो श्रोता रही है, मेरे ख्याल से पिछले कम से कम 20-25 अध्याय से, और शॉर्ट समय में वो थियोसॉफी भी ज्वाइन करी। आइए आभा जी, आपके पास 10 और +2 12 मिनट का समय। धन्यवाद। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी मास्टर्स को मेरा बहुत बहुत ब्रह्म वंदन। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस मंच की, थियोसॉफिकल सोसाइटी के त्रिवेणी मंच की, जिसने मुझे आप सभी विद्वानों के साथ शरीक होने का अवसर दिया और उनसे मैं जो कुछ अपने जीवन में सीख सकी, तो उसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। तो अब हम सीधे आज के शीर्षक की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो शीर्षक है वो है, हम केवल अपने लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए। तो महात्मा पत्र में एक महात्मा ने लिखा है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। लेकिन आम जनता के लिए मैं केवल एक शब्द जोड़ देना चाहती हूँ कि हम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। तो सबसे पहले आइए हम सब उन महात्मा के कथन को समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। हम सभी जानते हैं कि महात्मा एक आत्म साक्षात्कार प्राणी है, यानी जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है। वो जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्त है और वो मानव विकास के उस चरम तक जा पहुंचे हैं अपने, जहां अब तीनों लोकों में उनके सीखने के लिए कुछ भी बचा ही नहीं, जहां उनके सारे कर्म बंधन समाप्त हो चुके हैं और उन्हें अनुभव लेने की, यानी कोई नया अनुभव लेने की कोई प्यास नहीं है, जहां उनको फिर से जन्म लेने की कोई बाध्यता नहीं रही, और अब वो एक मुक्त आत्मा है फ्रेंड। वो अब सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और आनंद से भरी हुई जो है चेतना है, किंतु वे मानवता के कल्याण के लिए पृथ्वी पर निवास कर। भगवान बुद्ध भी कहते हैं, हम लोगों ने सभी ने सुना है कि मैं तब तक पृथ्वी को नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मेरे सभी भाइयों को मुक्ति नहीं मिल जाती। क्योंकि महात्माओं ने अपने सभी कर्मों को नष्ट कर दिया है। अब उनके पास कोई व्यक्तिगत भावना, इच्छा, चिंता या तनाव आदि नहीं है, क्योंकि उनके सातों शरीर जो है वो शुद्ध हो चुके हैं, परिशुद्ध हो चुके हैं, और उनकी चेतना एक उच्चतम स्तर तक पर केंद्रित है। वे अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हैं फ्रेंड। इसीलिए महात्मा जो है वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। फ्रेंड, दूसरी बात यह है कि अभिव्यक्ति में हर रचना का, हर फॉर्म का अपना एक अलग मूल्य होता है। महात्मा कहते हैं कि उपयोगिता का जो क्षेत्र है वो हर जगह पाया जाता है। हम सभी छोटे छोटे कीड़ों, चींटियों, मधुमक्खियों और केंचुओं के महत्व को हम सभी जानते ही हैं। वे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं और विभिन्न तरीकों से हमारी मदद करते हैं फ्रेंड, जिनके बिना हम नहीं रह सकते। कोविड-19 के दौरान हम सभी को ऑक्सीजन के उस मूल्य का पता चला जो हम फ्री में वृक्षों से लेते थे, जो हमें मुफ्त में ही वृक्षों से मिल जाती थी फ्रेंड। इसी तरीके से जो जानवर हैं वो भी जो है हमारे मददगार हैं कई तरीकों से, किंतु हम इंसान
न केवल अपने लिए, देखिए मेन टॉपिक क्या है, न केवल अपने लिए जीना बल्कि दूसरों के लिए भी जीना। अब ये दूसरे कौन है? ये हमारे माता पिता हो सकते हैं, बच्चे, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र या अन्य प्राणी हो सकते हैं। हम सभी एक हैं और एक ही जीवन सिद्धांत हम हमारे भीतर है, इसीलिए दूसरों को देना और उनकी मदद करना ही हमारा मूल स्वभाव है। हम अपने कई नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सुधारकों, शिक्षकों, चिकित्सकों और अधिकारियों को देखते हैं फ्रेंड्स, जिन्होंने दूसरों के लिए अपना आराम, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना परिवार और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी बलिदान दे दिया फ्रेंड्स। हम सभी मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल ऑलकॉट, डॉक्टर एनी बेसेंट और बिशप लेडबेटर की बलिदानी प्रकृति को जानते हैं। अभी जैसा बताया, हम सभी जानते हैं कि ब्लावत्स्की शाही परिवार से थी, किंतु उनके शिक्षक ने उनसे कहा कि क्या आप शादी करके एक आरामदायक जीवन जीना चाहेंगी या हमारे काम में मदद करना चाहेंगी? तो फ्रेंड्स, बिना किसी एक सेकंड को भी गंवाए ब्लावत्स्की मास्टर के कार्य में मदद करने के लिए तैयार हो गई और थियोसॉफी को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और पूरा जीवन मानवता के लिए व्यतीत किया। वे दूसरों के लिए काम करते हुए खुद को भूल गई थे। कर्नल ऑलकॉट के बारे में महात्मा कहते हैं कि हम सभी परिस्थितियों में उन पर भरोसा कर सकते हैं, जो आराम के त्याग को महत्व देता है, यहाँ तक कि जीवन को भी, और जब भी आवश्यकता पड़े खुशी से अपने जीवन को जोखिम में डाल देता है, आवश्यकता पड़ने पर कुछ भी खा लेता है और यहाँ तक कि बिना भोजन के भी रह सकता है, कहीं भी सो सकता है, कहीं भी काम कर सकता है और किसी भी बहिष्कृत जाति के साथ वो भाईचारा कर सकता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो किसी भी तरह के अभाव को भी सहन कर सकता है। हम सभी मदर टेरेसा को जानते हैं, सभी हम लोग परिचित हैं कि मदर टेरेसा ने गरीब और रोगग्रस्त लोगों की फ्रेंड सेवा की। देखा जाए तो वो ईसा मसीह की सच्ची भक्त थी और उन्होंने हर व्यक्ति में ईश्वर को देखा और पूरे मन से मानवता की सेवा की। श्री रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, अरविंद और सभी आध्यात्मिक गुरु, महात्मा गांधी, डॉक्टर अब्दुल कलाम और कई परोपकारी लोग जो हैं वो अपने लिए नहीं जीते हैं बल्कि दूसरों के लिए। तीसरी चीज ये है, हम सभी ने देखा फ्रेंड कि जितने भी IIT प्रोफेसर हुए, शिक्षक हुए, सरकारी डॉक्टर हुए, लोगों ने जरूरत पड़ने पर अपने जरूरतमंद भाई थे उनके लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी और ये लोग अभावग्रस्त, अनसिविलाइज्ड, जिन्हें फील्ड कहते हैं, असभ्य क्षेत्रों में गए, उन लोगों के साथ रहे और बिना किसी आशा के उन लोगों की सेवा की। अभी जैसा बताया गया, एक महिला डॉक्टर भक्ति देवी ने निस्वार्थ भाव से गरीब लोगों की सेवा की और उन्होंने 70,000 डिलीवरी कराई, अपने आप में एक रिकॉर्ड, और 1,50,000 मुफ्त ऑपरेशन की। इस निस्वार्थ कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। कोविड-19 के दौरान भी हमने कई डॉक्टरों, नर्सों, वैज्ञानिकों और स्वयं सेवकों की हमें सेवाओं के बारे में फ्रेंड्स पता चली। तो इसी के साथ पार्ट 1 समाप्त होता है और मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। और मैं निवेदन करूंगा मितालिनी जी से कि वे हमारे भाग 2 पर अब रोशनी डालें और आपके पास अब समय ही समय है। Thank you, Rajeshwari Didi, Abha Didi, for your beautiful translation. It gives me immense pleasure. So energetic,
and so courageous to explain or translate. Now we start our second part. As a Theosophy Society member, how we live for others or what is our main duty? About our duty, the Mahatma says, around you are acquaintance, friends, and associates in and outside the Theosophical Society. Point them to the light, lead them to the path, teach them, be a missionary of love and charity. Thus, in helping others, win your own salvation. It is the law of the nature that if we really help others, automatically we will be helped. But to help others, to lead them to the right path, to point them to the light, we should have knowledge. That knowledge is God's plan for evolution. When once man has seen that and really know it, then he is ready to help in evolution. At the feet of the master, we have studied, he who is in the path exists not for himself but for others. First, we start our work in our family. As a Theosophy member, we have our family. We have parents, wife, children, grandchildren, cousin, other assistant, pet animal, and plants. All the parents love their children, but if something will happen to all the parents love their children. If something will happen to their children or children's behavior hurt them, then they will be in depression. If your desires will not be fulfilled, then envy, anger, jealousy, laziness comes out. Then how can we help others? We should be aware of our lower nature. It hinders our progress and not allow us to help our near and dear ones. Most of the people spend their time and energy for collecting worldly things. They do not realize the value of the life. I remember a story. A 9 years young girl went to a 95 years old successful businessman to learn something about Atma. She asked, Grandpa, please tell me how Atma walking through you. For a few minutes, Grandpa remained silent. With full of tears in the eyes, he embraced the child, little girl, and said, today you opened my eyes, but I have no more time to know myself. I spend all the time for collecting worldly things, forming factories, companies, and others. But as a Theosophy member,
Now we have time. We try our best to know ourselves, to purify our lower nature and work for others. We have studied many books, attend many seminars and discussions. Every day we recite golden stairs and universal invocation. If you theoretically repeat it, then it has no effect. We should practice it in our daily life, reflect it in our daily life. Then we will be able to help our near and dear one. Our teaching and advices do not change our near and dear ones, but our activity, behavior, speech, unselfish love inspire them greatly. Dr. Aniveshan, in her book, The Laws of the Higher Life, says, not for the sake of the child is dear, but for the sake of the self is the child dear. We must work for the sake of the work, not in the hope of seeing the result or reward. Do our karma cheerfully. Then our love and unselfish service not only help our near and dear ones, but also provides us golden opportunity to do greater work. Watching the sincerity and perfect duty of an individual, the great one says in Mahatma letter, once night, the great teacher went to his house, knocked his door. When that person opened the door, he saw a beautiful, tall, bright sadhu standing in front of him. Sadhu said, I have been watching you. You have completed your family responsibility unselfishly and perfectly. Now it is the time to come and help us in our work. So, first we should do our family duty wholeheartedly, sincerely, without any expectation. Then, in our profession. In profession, as a teacher, officer, engineer, doctor, nurse, we should do our duty perfectly and cheerfully as a theosophy member. Post does not matter, but motive of our work matters. Our unselfish service attracts the attention of the great ones. Seeing the service of a nurse, Mahatma wrote a letter to her. Are you ready to do your part in the great work of philanthropy? You have offered yourself for the Red Cross. But sister, there are sickness and wounds of the soul that no surgeon's art can cure. Shall you help us to teach mankind that the soul sick must heal themselves? From the above statement, we understand that what is our main duty?
to teach our brother, point them to the light, lead them to the path. In 3 ways, we can lead our brother to the right path. That 3 ways are study, meditation, and practice. Study, meditation, and practice. Study. To learn more and more, we have to study theosophical books. When a man studies and thinks on a theosophical subject deeply, it has its effect on him as well as others. He is sending out all around him a vibration which is very powerful, like a sound in the midst of a vast silence, or a light shining forth on the darkest night. If the thought of a single person produces these results, then the power of the united thought of a number of people is far more greater than a single person. So, we, the Theosophical Society members, should attend our lodge meeting and study classes. We should study the prescribed book previously. Group study classes have a tremendous effect upon the surrounding population. These effects are, it should be sure that the thought form is capable of conveying the exact nature of the thought to those who are somewhat prepared to receive it. Secondly, thought vibration, it reaches a far wider circle and influence others. Presence of great ones or their peoples, when who work loyally, Mahatmas thought, and those of their peoples are frequently drawn towards it. In this way, a force much greater than ours often shine out from our gathering. Fourthly, when we are unselfish and full of devotion, then light and love of the Logos, Lord, is surrounding to the channel to us. This is the greatest service of a group study. So, to study, we can help others, though it is invisible. But in the book, The Laws of the Higher Life, it's of Ledwitter, describe it vividly, the inner side of the Lord's message. Meditation. What we studied, we should have to go its deeper meaning. It is only possible in meditation. Otherwise, we can realize the real meaning of the deeper meaning of that sentence. When our meditation is fruitful, then it will help us as well as others. For example, we meditate on unity of life, or we recite O hidden life in vibrant in every atom. Really. But if we meditate on it, then we see the result. And if we really meditate, we see the result. When we contemplate,
we are at the mental plane. It has its effect for us and others also. But when our mind becomes silent, our consciousness centered in Buddhic plane, we realize the unity of life. Even it may be for few minutes or hours or a day, whatever it may be. We realize the unity of life. It has its tremendous effect. At that moment also, we live not for us, but for others. Then our meditation will be fruitful when we reflect it in our daily life and reflect it in our daily life. After realizing the unity of life, we cannot hurt others. Even when we are going to pluck flowers, our inner voice whispers. It has life. It has also feeling. It feels pain. It is so we should not give pain to plucking the flower. It is not pain for the tree only. That pain affects the whole universe. We know it, we understood it, and we also realize it in the meditation. In real meditation, the individual consciousness merged with individual consciousness. He is in the state of samadhi. He is in the atmic state. At that moment, he is doing greater service to all living beings. As he realizes oneness of life, for him, every form shall be dear, not for the sake of the form, but for the sake of the self. For him, meditation is not different from daily life. He is very sensitive to his surrounding, to everyone who come in contact with him. He may be a plant, animal, maid servant, anyone who come in contact to him. Then always he is ready for others. His cheerful face, brave words, bright looks, helpful thoughts, behavior, works, study, teaching, music, art, science, all things help others. So, the first object of the TS is philanthropy. The true theosophist is a philanthropist, lives not for himself, but for the world he lives. Thank you for your patient hearing. Thank you all. Thank you. It was really wonderful. So many points you covered like a river. And now, Rajeshwari ji, please go ahead. You have 10 plus 12, 2 minutes. Please go ahead. Thank you. With your second part. Unmute yourself. Unmute yourself. No, unmute not to. Please unmute yourself. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણે બીજા ભાગમાં જોઈએ થિયોસોફિકલ સોસાયટીના એક સભ્ય તરીકે માનવજાત પ્રત્યે આપણું શું કર્તવ્ય છે. એમાં કહે છે કે આપણી આસપાસ પરિચિતો, મિત્રો, સાથી, સહયોગીઓ છે, તે જ રીતે થિયોસોફિકલ સોસાયટીમાં પણ છે. તેમને પ્રકાશ તરફ લઈ જાઓ
અને સાચો માર્ગ બતાવો, તેમને શીખવો. તમે પ્રેમ અને દાનના મિશનરી બનો અને બીજાને મદદ કરી તમે તમારી પોતાની રીતે મુક્તિને પ્રાપ્ત કરો. પ્રકૃતિનો એક નિયમ છે, એક બોલ છે, એને આપણે જ્યારે ફેંકીએ એ આપણી પાસે પાછો આવે છે. એ જ રીતે આપણે બીજાની મદદ કરીએ તો આપણને પણ તેમની મદદ આપોઆપ મળી જાય છે. પરંતુ બીજાની મદદ કરવામાં અને એમને દોરવામાં, એમને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવામાં આપણને એનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. આપણે અંધારામાં તીર ના મારી શકીએ. એ જ્ઞાન ઈશ્વરનું, તેમની ઉત્ક્રાંતિનું આયોજન છે. જ્યારે માણસે એકવાર આ જોયું અને ખરેખર જાણી લીધું હોય ત્યારે અને તો જ એ આ ઉત્ક્રાંતિની વ્યવસ્થામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. જે આ માર્ગ પર છે તે પોતાના માટે નથી જીવતો, પરંતુ તે વિશ્વમાં જીવે છે, તેને માટે જીવન કાઢે છે. તેમણે કહ્યું કે સૌથી કાર્ય હંમેશા ચેરિટી બિગિન્સ ફ્રોમ હોમ. આપણે પોતાના કુટુંબથી શરૂઆત કરવી જોઈએ. આપણા પત્ની, બાળકો, પુત્ર, પૌત્રી, માતા, પિતા બધાને પ્રેમ કરવો જોઈએ. શું એ પ્રેમ વાસ્તવિક છે, સાચો પ્રેમ છે? જો આપણા બાળકને કંઈ પણ થાય અથવા એમની વર્તણૂક આપણને ક્રોધિત કરે અથવા તો એનાથી આપણે હતાશ થઈ જઈએ છીએ, આપણી કોઈ ઈચ્છા પરિપૂર્ણ ન થાય તો પણ આપણને ગુસ્સો, ઈર્ષા, અદેખાઈ કે આળસ આવે છે. ત્યારે આપણે કોઈને મદદ કેવી રીતે કરી શકીએ? આપણે આપણી નિમ્ન કક્ષાની પ્રકૃતિ અને પ્રવૃત્તિ બધેથી માહિતગાર હોવા જોઈએ. અથવા તો નહીતર શું બનશે કે તે આપણને વિકાસમાં અવરોધક બનશે અને તેથી આપણે આપણા નિકટના સ્નેહીજનોની મદદ કરી શકતા નથી. ઈર્ષા ભાવને કારણે એવું થાય છે કે તે લોકો આપણાથી કદાચ આગળ નીકળી જશે. મોટા ભાગના લોકો પોતાના અને શક્તિ ભૌતિક વસ્તુઓની પાછળ વાપરતા હોય છે. પોતાની દરેક શક્તિ ભૌતિક વસ્તુની પાછળ વાપરે છે. પોતાના જીવનનું મૂલ્ય સમજતા નથી. અહીંયા એમને એક વાત યાદ આવે છે કે 9 વર્ષની એક છોકરીએ 95 વર્ષના એક દાદાને પૂછ્યું કે તમે તમારા આત્મા દ્વારા કેવી રીતે કામ કરો છો? આત્મા દ્વારા કામ કરો તો તમે કેવી રીતે કરો છો? તો દાદાજી તો મૌન થઈ ગયા અને બાળકીને ભેટીને રડી પડ્યા અને કહે કે આજે તે મારી આંખ ખોલી નાખી, પણ હવે મારી પાસે સમય નથી. એટલે સમજણ વગરનું કોઈ પણ જ્ઞાન નકામું છે. આપણી પાસે સમય છે પોતાના વિશે જાણવાનું, નિમ્ન પ્રકૃતિને શુદ્ધ કરવાની અને બીજાને મદદ કરવાની કોશિશ કરવાનો સમય છે. આપણું શિક્ષણ અને સલાહથી આપણે નિકટના માણસોને બદલાવી નથી શકતા, પણ આપણી પોતાની પ્રવૃત્તિ, વર્તણૂક, વાણી અને નિસ્વાર્થ પ્રેમથી તેઓને ખૂબ જ સારી પ્રેરણા મળે છે. આપણા બાળકો પણ જોઈને શીખે છે. આપણા કર્મોને રાજી ખુશીથી સ્વીકારો, ત્યારબાદ આપનો પ્રેમ આપણા નિકટના સ્નેહીજનોને મદદરૂપ બને છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ તેથી આપણને વધારે ઉચ્ચ તથા મહાન કાર્યો કરવાની તક પણ મળે છે. કર્તવ્ય નિષ્ઠા અને ફરજ ઉપર મહાત્માઓએ ખૂબ ધ્યાન આપ્યું છે. એક દિવસ એક મહાપુરુષ રાત્રે એની ઘરે જાય છે અને એનું બારણું ખખડાવે છે. દ્વાર ખુલે છે. તે વ્યક્તિ એક સુંદર, ઊંચા અને તેજસ્વી સાધુને તેની સામે ઉભેલા જુએ છે. સાધુએ શું કહ્યું કે હું તારું નિરીક્ષણ કરી રહ્યો છું. બહુ મહત્વની વાત છે. આપણું હંમેશા કોઈ નિરીક્ષણ કરી રહ્યું છે. હવે તે અમારી સાથે આવી, તે તારી પારિવારિક જવાબદારી બધી પૂરી કરી નાખી છે. હવે તું અમારી સાથે આવી અને અમારા કાર્યમાં સહાયભૂત થવાનો સમય તારા માટે આવી ગયો છે, એટલે આવ. એટલે કોઈ પણ અપેક્ષા વગર સૌથી પ્રથમ તો આપણે આપણી કૌટુંબિક કર્તવ્યનું પાલન કરવું જોઈએ અને કૌટુંબિક કર્તવ્યના પાલનને કારણે કોઈ પણ એક દિવસ મહાપુરુષ આવશે અને આપણને યોગ્ય માર્ગે દોરશે. શિક્ષકો, એન્જિનિયર, ડોક્ટર, નર્સ કોઈ પણ હોય, કોઈ પણ પોસ્ટ ગમે તે હોય, પણ આપણે આપણા કર્તવ્યનું પૂરેપૂરું પાલન રાજી ખુશીથી કરવું જોઈએ. કોઈ પણ નાનું કાર્ય હોય તે પણ રાજી ખુશીથી કરવું જોઈએ, સ્વીકારેલું કાર્ય. તમે કયા પદ પર છો તેનું મહત્વ નથી. સેવા કરવાનો પાછળ તમારું પદ મહત્વનું નથી. આપણી નિસ્વાર્થ સેવાઓથી મહાત્માઓનું ધ્યાન હંમેશા આપણી તરફ આકર્ષાય છે. નર્સોની સેવા તમે જુઓ તો એને જોઈને એક પત્ર લખે છે મહાત્મા એને કે પરોપકારના મહત્વના કાર્યમાં તું તારો ભાગ ભજવવા માટે તૈયાર છે. તે તારી જાતને રેડક્રોસને સમર્પિત કરી છે
પણ બેન અહીં આત્માની બીમારી છે. જખમો જે કોઈ સર્જનની આવડતથી બદલાવી શકાય તેમ નથી. માનવજાતને એ શીખવવામાં તારે અમને મદદ કરવી જોઈએ. જો તમે તમારું કાર્ય પ્રોફેશનલ કાર્ય સરસ રીતે કરશો તો આ પણ તમે સરસ રીતે કરી શકો એવું મહાત્માઓ કહે છે. મુખ્ય કર્તવ્ય છે આપણા બંધુઓને શીખવવું. જે આપણને આવડે છે એ આપણે શીખવવું. તેમને પ્રકાશ તરફ દોરી જવા માટે થઈને આપણે એને 3 રીતે મદદ કરી શકીએ: અભ્યાસ કરાવીને, ધ્યાન શીખડાવીને અને સેવા કરી. જો આપણને સમજાઈ ગયું હોય કે બીજાને મદદ કરવી એ આપણું કર્તવ્ય છે તો તેના માટે થઈને શું કરવું જોઈએ? તો થિયોસોફિકલ પુસ્તકો આપણે વાંચશું અને આપશું, લેખો લખીશું અને પ્રવચનો પણ આયોજિત કરીશું, લોજની મિટિંગોમાં હાજરી આપીશું, અભ્યાસ વર્ગોમાં જઈશું અને ગ્રુપ સ્ટડી અથવા લોજની મિટિંગ બીજા લોકોને કેવી રીતે મદદરૂપ કરી શકાય એનો આપણે લાંબો વિચાર કરીશું. બિશપ લેડમીટરે તેમના પુસ્તક હિડન સાઇડ ઓફ ધ લોજ મીટિંગમાં વ્યક્તિગત અભ્યાસ અને સામૂહિક અભ્યાસનું મહત્વ વર્ણવ્યું છે. બીજી વાત એ છે કે દરેક સ્પંદનની જેમ જ તે આસપાસના પદાર્થોમાં ફરતું રહે છે. ત્રીજું, આપણા ગ્રુપ સ્ટડીમાં આપણા સમર્પણ ભક્તિ અને સંનિષ્ઠ પ્રયત્નો મહાત્માઓનું ધ્યાન આકર્ષે છે. આપણા કરતા ઘણી મહાન એવી તેમની શક્તિથી તે આપણી આવી સામૂહિક બેઠકોમાં ઝળહળી ઉઠે છે. તે નવો પ્રકાશ ફેલાવે છે. ચોથું, જ્યારે જીવન અને પ્રકાશના લોગો સંપૂર્ણ સૌર પદ્ધતિને આવરી લે છે ત્યારે આવી મિટિંગોમાં કોઈ વધારે મહત્વનું ફોર્સ પણ બહાર આવે છે. એક ટીએસ મેમ્બરની આ જ વાસ્તવિક અને મહાન નિસ્વાર્થ સેવા છે. તે સાધારણ ચક્ષુઓ વડે, સાધારણ આંખ વડે નથી જોઈ શકાતી. તેના માટે દિવ્ય દ્રષ્ટિ જરૂરી છે. પરંતુ પ્રભાવ તો એનો પડે જ છે, સમજાય કે ન સમજાય, પણ જે આપણે નિસ્વાર્થપણે સેવા કરીએ તેનો પ્રભાવ તો પડે જ છે. જ્યારે બીજાની પણ એના માટે થઈને જ્યારે બીજાની સેવા કરીએ ત્યારે આપણે આપણી જાતને ભૂલી જવી જોઈએ. ત્યારે જ આપણું કામ સરળ બને છે અને આપણને પ્રકાશની પ્રાપ્તિ થાય છે. આપણે અંતમાં તેમણે કહ્યું કે આપણે જે અભ્યાસ કર્યો છે, જે શીખ્યા છીએ, તેના વધારે ગહન અર્થમાં આપણે ઊંડા ઉતરવું જોઈએ. એ કવર ધ્યાનથી જ સંભવ છે. ધ્યાનને એમણે ખૂબ મહત્વ આપ્યું છે. ખરેખર ધ્યાનમાં વ્યક્તિગત ચેતના પરાની ચેતનામાં ભળી જાય છે. તે ક્ષણે તે દરેક જીવંત જીવોની મહાન સેવા કરે છે. જ્યારે તેને જીવનની આ વાત સમજાય છે ત્યારે તેને જીવનના એકત્વના બધા સ્વરૂપો પ્રિય લાગે છે. તે પોતાને માટે નથી. હવે તેને માટે ધ્યાન રોજિંદા જીવનથી જુદી હોય તેવી બાબત રહેતી નથી. ધ્યાન ઉપર એમણે ખૂબ ધ્યાન આપ્યું છે. એટલે આજની જે ટોક છે એમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બીજા માટે જીવો. એ માટે જે ગુજરાતી ભાષા જાણે છે એ લોકો ઉમાશંકર જોશીને ઓળખતા જ હશે. એમણે એમની એક બહુ જ પ્રસિદ્ધ કવિતામાં કહ્યું, બધાને પૂછ્યું એમણે કે કોણ મારું છે, કોણ મારું છે, પણ છેલ્લે એને પોતાના હૃદયને પૂછ્યું તો હૃદયે પણ કીધું કે હું તમારી પાસે છું પણ બીજા માટે. એની જે 3 લીટી છે એની સાથે હું મારું વક્તવ્ય પૂરું કરીશ. છેલ્લે પૂછ્યું રુધિર જર આ પાણી પોચા હૈયાને, વાલા તું તો મુજ રહીશ ને છો જગે ન કો મારું, ને એ દંભી એટલે કે હૃદયે શું જવાબ આપ્યો, ને એ દંભી શરમ તજી કહે તું ન માલિક મારો, હું તારા વસુ અવર કાચે. હું તારામાં બીજા માટે વસું છું. આપણું હૃદય બીજા માટે ધબકે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. મને આમાં તક આપી એના બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. बहुत सुंदर ट्रांसलेशन ऑन द पॉइंट. आभा जी, आपकी बारी है और रियली में बहुत मजा आ रहा है इन भाषाओं के संगम में. आगे बढ़िए. तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ मितालिनी जी का, राजेश्वरी जी का. बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस बात को आप लोगों के समक्ष रखा. तो आइए अब हम उसके दूसरे भाग की ओर चलते हैं, सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट में सबसे बड़ी चीज ये है जो हमें विचारनी है कि एज ए थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में मानवता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य, ये बहुत जरूरी है. हमारे कर्तव्य के बारे में महात्मा कहते हैं कि आपके चारों ओर परिचित मित्र और सहयोगी हैं, अंदर और बाहर दोनों ओर. अब कर्तव्य क्या है एज ए
थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में हम उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएं, यानी उन्हें उस पथ पर ले जाएं जहां उन्हें सिखाएं, प्रेम, सेवा और मिशनरी बने, उनको ज्ञान की ओर अग्रसर करें। इस प्रकार हम दूसरों की मदद करके अपना उद्धार करें। प्रकृति का ये नियम है कि यदि हम सचमुच दूसरों की मदद करेंगे तो हमें मदद स्वतः ही मिल जाए, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए, उन्हें प्रकाश की ओर इंगित करने के लिए, उन्हें सही रास्ते पे ले जाने के लिए हमारे भीतर फ्रेंड ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान विकास के लिए ईश्वर की एक योजना है। जब एक बार मनुष्य उसे देख लेता है और वास्तव में उसे जान लेता है, तो वो विकास में मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। वो जो इस मार्ग पे चल पड़ा है, फिर वो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए जीता है जिसमें वो रहता है। तो सबसे पहले जैसा कि बताया कि चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले आइए हम परिवार से ही अपना कार्य आरंभ करते हैं। तो परिवार में हमारे माता पिता होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, पोते पोतियां, चचेरे भाई बहन, अन्य सहायक होते हैं, पालतू जानवर होते हैं और हमारे पौधे भी होते हैं उनमें शामिल। लेकिन प्रश्न है, क्या सभी माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? और ये प्यार हम जानते हैं कि सभी प्यार करते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन क्या ये प्यार सच्चा है? क्योंकि यदि बच्चों के साथ कुछ हो जाता है या बच्चों का व्यवहार में ठेस पहुंचाता है फ्रेंड्स, तो वे अवसाद में आते हैं। माता पिता बड़ी जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। और यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध, ईर्ष्या और आलस्य बाहर दिखाई देने लगते हैं। हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं? तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या चाहिए? हमारी जो निम्न प्रकृति है, जो हमारा लोअर नेचर है फ्रेंड्स, उसके प्रति हमें लगातार सचेत रहना, जिसके कारण हमारी प्रगति में बाधा आए। तो हमें क्या चाहिए? हमारी जो निम्न प्रकृति है उसके प्रति हम सचेत बने, और यही बाधा के कारण हम अपने प्रियजनों की मदद नहीं कर पाते। अधिकांश लोग अपना समय और ऊर्जा जो है वो सांसारिक चीजों में खर्च करते हैं, क्योंकि वो जीवन के मूल्यों को नहीं पहचानते। मुझे एक कहानी याद आती है, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुनी, अब मैं हिंदी में रखती हूँ उसको, कि एक 9 साल की बच्ची अपने 95 वर्ष के एक सफल व्यवसायी दादाजी के पास जाती है, और वो आत्मा के बारे में कुछ सीखने के लिए जाती है, और उसने प्रश्न किया कि दादाजी, कृपया आप मुझे ये बताएं कि आत्मा आपके माध्यम से कैसे कार्य करती है। कुछ मिनट तक दादाजी शांत रहे, फिर आंखों में आंसू भरकर उन्होंने उस बच्ची को गले लगा लिया और कहा कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन क्या करूं, अब मेरे पास समय नहीं। ये कितनी कारुणिक बात है। इसको यदि आप सोचें, आप उस दृश्य को सामने लाएं, तो पूरी जिंदगी निकल गई एक उनकी सफलता के पैमाने में, लेकिन आत्मा के बारे में उन्हें बाद में लगा और बड़ा अफसोस हुआ कि उनके पास समय नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे पास समय है एज ए थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर के रूप में। तो हमारे पास अभी समय है, और समय रहते हम अपने को जाने और अपनी जो निम्न प्रकृति है उसको शुद्ध करें। सबसे पहले हमें प्योरीफाई करना होगा अपनी उस निम्न प्रकृति को, और दूसरों के लिए कार्य करें। हमारी शिक्षाएं और सलाह हमारे प्रियजनों को नहीं बदलती है, बल्कि हमारी गतिविधि, हमारा व्यवहार, वाणी और हमारा निस्वार्थ प्रेम जो है वो उन्हें प्रेरित करता है सही दिशा पे ले जाने के लिए। एनी बेसेंट अपनी पुस्तक में कहती हैं कि बच्चों के लिए बच्चा प्रिय नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है, बल्कि स्वयं के लिए बच्चा मित्र। मतलब क्या है? इसीलिए हमें काम के लिए काम करना चाहिए, यानी वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क, न कि परिणाम करने की आशा। तो मैं बाद में रखूंगी, इसमें मुझे गीता के बहुत श्लोक जो है रिजेंबल कर रहे हैं इस पूरे उसमें, जो मैं बाद में रखना चाहूंगी। जितने भी कर्म है हमें प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। हमारा प्रेम और हमारी निस्वार्थ सेवा
यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेम और निस्वार्थ सेवा। न केवल अपने प्रियजनों की मदद करती है, बल्कि हमें बड़े से बड़ा काम करने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करती है। एक व्यक्ति की ईमानदारी और उसके पूर्ण कर्तव्य के पालन को देखकर एक महान गुरु उसके घर गए और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और उस व्यक्ति ने देखा कि उसके सामने एक लंबा, सुंदर, तेजस्वी साधु खड़ा हुआ है। तो साधु ने कहा कि मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुमने कितने निस्वार्थ भाव से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं, लेकिन अब समय आ गया है, तुम आओ और हमारे कार्यों में मदद करो। अतः सबसे पहले हमें क्या करना है, बिना किसी अपेक्षा के अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करना है। एक पेशेवर के रूप में हमें एक महान शिक्षक, यदि हम पेशा करते हैं तो उसके बाद में एक पेशेवर के रूप में हमें एक महान शिक्षक, अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर या नर्स, जो भी हमारा पेशा हो, उसके रूप में अपना कर्तव्य प्रसन्नता पूर्वक और दक्षता के साथ करना चाहिए, पूरे मनोयोग के साथ करना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण पद मायने नहीं रखता है, बल्कि हमारी निस्वार्थ सेवाएं जो हैं वो लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। एक नर्स की सेवाएं देखकर एक महात्मा ने उन्हें पत्र लिखा और कहा कि क्या आप परोपकार के महान कार्य में अपनी भूमिका अदा करने के लिए तैयार हैं? आपने स्वयं को, आगे महात्मा कहते हैं उनसे कि आपने स्वयं को रेड क्रॉस के रूप में, रेड क्रॉस के लिए प्रस्तुत किया है, लेकिन मेरी बहन, आत्मा की ऐसी बीमारियां और घाव हैं जिन्हें कोई सर्जन ठीक नहीं कर सकता। कितना सुंदर कहा। क्या आप मानव जाति को ये सिखाने में हमारी मदद करेंगी कि मानसिक रूप से बीमार लोगों को खुद को ठीक करना होगा? इस कथन से हम क्या समझते हैं कि मुख्य कर्तव्य क्या है? अपने भाइयों को शिक्षित करना और उन्हें प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर ले जाना, यानी ज्ञान की ओर ले जाते हुए उन्हें इस परोपकार के मार्ग में अग्रसर करना। अब कैसे कर सकते हैं हम अपने भाइयों की मदद? 3 प्रकार से कर सकते हैं, 3 तरीके हैं। पहला है अध्ययन, जिसको हम स्वाध्याय भी कहते हैं, स्व का अध्ययन। दूसरा ध्यान और तीसरा सेवा। यदि हम जानते हैं तो दूसरों की जानने में मदद करना हमारा कर्तव्य है। दूसरों को जानने में मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उसको थियोसॉफिकल किताबें दे सकते हैं, लेख लिखेंगे, व्याख्यान देंगे, लेकिन सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, वो है लॉज की बैठकों, अध्ययन कक्षाएं, जो अध्ययन की कक्षाएं होती हैं हमारी, और वो व्याख्यानों में हमें भाग लेना चाहिए। इससे न केवल भाग लेना चाहिए, बल्कि इसे हमें अपने दैनिक जीवन में प्रतिबिंबित करना चाहिए, अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, प्रयोग करना है। हम सभी जानते हैं कि सामूहिक अध्ययन या लॉज की बैठकें कैसे दूसरों की मदद करती हैं, इसमें आगे बताने की जरूरत नहीं। बिशप बीटर ने अपनी पुस्तक हिडन साइड ऑफ द लॉज मीटिंग्स में व्यक्तिगत अध्ययन और सामूहिक अध्ययन, इसके महत्व और उसके प्रभाव का वर्णन किया बड़ी खूबसूरती से। सर्वप्रथम हमें अपने मनस शरीर जो है उस पे काम करना है, और ये मनस शरीर यानी मेंटल बॉडी का एक कंपन है, ये जो बैठके हैं, और ये उस शरीर में विभिन्न स्तरों पे होता है। ये पहली चीज हुई। दूसरे कंपन की तरह ये आसपास के मामलों में पहले खुद को रिप्रोड्यूस करता है, पुनः उत्पन्न करता है। तीसरे, हमारे सामूहिक अध्ययन जो हम करते हैं उसमें हमारी जो श्रद्धा है, यानी हमारा जो फेथ है और ईमानदार जो प्रयास है हमारा, वो जो है वो महात्माओं का ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि 2 चीजों को हमने अच्छी तरह कर लिया, जिससे हमारी सभाओं में हमसे कहीं अधिक महान शक्ति जो है वो प्रतिभासित होती है, इसको हम फील करते हैं, हम अनुभव करते हैं। चौथे, ऐसी बैठकों में ये प्रकाश जो हमें मिलता है वो न केवल लोगों के जीवन में व्याप्त होता है, बल्कि पूरे सौर मंडल में व्याप्त हो जाता है। और यही
थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य की सबसे बड़ी और निस्वार्थ सेवा है फ्रेंड्स। यद्यपि ये हमें भौतिक रूप से दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका प्रभाव अवश्य होता है, वो अनुभव किए जाने वाली चीज है। और जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं और खुद को भूल जाते हैं, तब हम देखेंगे कि हमारा जो काम है वो बहुत हल्का हो जाता है और बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम इसका लास्ट पार्ट की ओर आते हैं, मेडिटेशन यानी ध्यान। अब तक हमने जो भी अध्ययन किया है, अब हमें इसके गहन अर्थ की ओर जाना चाहिए, और ये गहन अर्थ हमें केवल ध्यान से ही मिलेगा, ध्यान में ही संभव है। क्योंकि जो वास्तविक ध्यान जो होता है, उसमें व्यक्तिगत चेतना जो है वो सार्वजनिक चेतना में विलीन हो जाती है, उसके अंदर मर्ज हो जाती है। और उस समय जो है, जब ये मर्ज हो जाती है, तो उस समय जो व्यक्ति है वो सभी प्राणियों की सेवा में रत हो जाता है, उनकी महान सेवा करता है। और जैसे ही उसे अपने जीवन में उस एकता का एहसास होता है, उस वननेस का एहसास होता है, तो उसके लिए हर जीवन जो होता है वो उसके केवल खुद के लिए नहीं होता है, बल्कि उसके लिए जो ध्यान होता है वो दैनिक जीवन से अलग न होकर उसके जीवन का ही एक अभिन्न पार्ट बन जाता है, एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो इस वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने इतने मनोयोग से इसको सुना। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मेरे सामने मितालिनी जी है, राजेश्वरी जी है और आभा जी है। मुझे ऐसा लगा कि मैं 3 नदियों के जो संगम रहता है पवित्र, उसकी धाराओं चारों ओर मेरे बह रही है, और वो एक अलग अलग भाषा में लेकिन एक सा ज्ञान दे रही है। अद्भुत अद्भुत। और मितालिनी जी, आपने क्या लिखा है, मतलब उसके अंदर जो डूब जाएगा ना, वो अपने आप ही मस्त होकर बोलेगा। आभा जी भी मस्त होकर बोली, राजेश्वरी जी भी ऐसा आत्मसात किया मानो आपने उनके अंदर उसे रचा बसा दिया हो। बहुत बढ़िया मितालिनी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कई बार हम जो विषय बोलते हैं, आप भी मितालिनी जी कुछ और ऐड करना चाहती हो, या राजेश्वरी जी कुछ और ऐड करना चाहती हो। आभा जी ने तो घोषित किया है कि वो इससे रिलेटेड कुछ गीता का ज्वाइन करना चाहती है, तो मैं चाहूंगा कि अभी आप ये मुख्य धारा और तीनों की कुछ 1-1, 2-2 मिनट लें और हमें और ज्ञान से सराबोर करें। फिर जो हमारे उपस्थित लोग हैं वे भी इसमें जुड़ेंगे। आज रमेश जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, काफी लोग आए हुए हैं। तो कहिए मितालिनी जी, कुछ कहना है और ऐड करना है तो जो भी मन में आ रहा हो। अनम्यूट करिए मितालिनी जी, अनम्यूट। हाँ जी, हाँ जी, हो गया हो गया। नहीं, मेरा कुछ ऐड करने के लिए नहीं है, जो थॉट था मैं शेयर कर दी। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। हाँ जी, राजेश्वरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप और ऐड करना चाहते हो? आपने गुजराती एक बात કહેવાની છે કે મને now you લાગ્યું can કે say in Hindi or English also, so everyone can okay, no problem. Only one thing I would like to add in that in Gita one श्लोक is there, yoga कर्मसु कौशलम। तो ये जो बात है वो जो महापात्रा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताई कि जो कर्म में कुशल होते हैं वो ही आगे जाके महात्मा बनते हैं, और कर्म के कौशल्य के कारण वो सभी जगह अपनी जगह बना सकते हैं। ये एक बात मुझे ऐड करनी थी। जी जी जी, हाँ भाजी, उसके बाद जी। काफी लोग हैं, उन तक तो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज जो मुझे इसमें लगी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गीता को जी रही हूँ, और एज ए जो मिताली जी ने लिखा है, मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने गीता को ही उसको दोबारा से लिखा है, क्योंकि बहुत से श्लोक इससे मैच करते हैं। एक है गीता का अध्याय है चैप्टर 6, उसका 5वां श्लोक है, उद्धरेत आत्मानम आत्मानम नात्मानम अवसादये आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा। तो ये एक्चुअली हमें जो लगता है परोपकार, बेसिकली हम दूसरों की मदद करके हम खुद पे परोपकार करते हैं। अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है।
तो जब हम वननेस में आ जाते हैं, जब हमारे अंदर, क्योंकि देखा जाए तो लॉ ऑफ वननेस है, लॉ ऑफ यूनिटी काम कर रहा है, कोई अलग है ही नहीं। तो बेसिकली आपको लग रहा है कि आप दूसरों का भला कर रहे हैं, बेसिकली आप अपना ही भला कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा का ही तो भला कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। ये इसी में चैप्टर 6 में श्लोक नंबर 29 है, सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतात्मचात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्श। सर्वत्र जो एक इक्वेनिमिटी है, लॉ ऑफ इक्वेनिमिटी है, जो हर वक्त वो अलग देख ही नहीं रहा है, उसके लिए जो सब में अपने को देखता है, अपने में सबको देखता है, तो उसके लिए दूसरा नहीं है। तो मैं सोचती हूँ जो मैडम ब्लास्की हो गई, एनी बेसेंट हो गई, मदर टेरेसा हो गई, इन लोगों ने काम कैसे किए, क्योंकि वो लॉ ऑफ इक्वेनिमिटी मतलब उनके लिए कोई दूसरा ही नहीं था। यदि हमारे अंदर सेपरेशन की भावना आएगी तो हम शायद उस काम को नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब लॉ ऑफ वननेस हो गया, जब एक इक्वेनिमिटी की चीज आ गई, तो बस वो काम नहीं करते, काम उनके थ्रू होता है, वो केवल एक मीडियम हो जाते हैं। काम कौन कर रहा है, वो डिविनिटी कर रहा है, तो वो जो डिविनिटी के थ्रू जो कहते हैं कि दे आर ओनली द मीडियम, और तभी वो कार्य उनके लिए बड़ा आसान और हल्का हो जाता है, क्योंकि हम अपने को मान ही नहीं रहे करता। जब अपने को करता नहीं मान रहे तो हम मीडियम मान रहे, तो काम कितना आसान होगा, इसको हम अनुभव करके देखेंगे। तो ये एक जो चीज है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। और एक मैथिली शरण गुप्त की मुझे एक प्रसिद्ध कविता याद आती है, जो भारत भारती में लिखी थी, शायद आप लोगों ने भी बहुतों ने सुनी होगी, कि विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न जो मृत्यु जो वृथा दिए वृथा मरे, जिया नहीं वही की जो मरान आपके लिए। यही प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य। तो बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी। तो कोई भी विषय अगर इतना खूबसूरती से अगर लिखा गया और उसे आत्मसात कर दे, तो किस तरह से हमारे अंदर एक स्पार्कल ट्रिगर करता है, उसका उदाहरण है कि हम लोग इस तरह से जो एकदम आत्मविभोर हो जाते हैं। ये मुझे आपकी एक लाइन जो मैंने यहाँ लिखी वो बड़ी अच्छी थी कि हम लोग मतलब जो अगर फिजिकल रूप से सिक है तो बात ठीक है, लेकिन अगर हम सोल सिक है, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि सोल सिक, अगर हम आत्मा से ही पीड़ित हैं या आत्मा से ही बीमार हैं, तो हम स्वयं ही उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा वाक्य है जो शायद बहुत सोचने लायक है, और इसमें बहुत सारा ब्रह्मांड का ज्ञान है। सोल सिक, ये हमेशा मुझे याद रहेगा। यस शिंदे जी, कुछ हमें और प्रदान करेंगे आप? Very good terms have come. Soul sick, yoga, karmasu, kaushalam. So many things are there. Yes, it is really, our soul is starving actually. Soul is starving. It is not properly fed. And therefore, it has become weak. So it is sick in that sense. And therefore, we are not doing the soul feeding. Unless there is soul feeding, what is it that feeds the soul? It is meditation. Yeah. Meditation nourishes the soul. And meditation is not sitting in Padmasana, etc., but to be attentive, alert, and aware, as Krishnamurti says. I have thought over it. When we see a beautiful flower, what happens? What kind of experience we get? The moment we see the beautiful flowers, our soul becomes joyous. The moment we see the beautiful flowers, we immediately, within that moment, we are experiencing the joy, ananda, bliss. But the next moment, it is a shock to human beings, because human being is provided with desires and thoughts. So immediately desires and thoughts, they enter in this moment and they bring our level of consciousness to the thought and desire level.
But when we are feeling, when we are experiencing the beauty of the flower, that time we are more than mental world. We are in the buddhic, we are in the soul. And therefore, that moment was the moment of joy. So, yoga karmasu kaushalan means we are here actually to act. Nahi kaschit kshanam apu jatu tisnitya akarma kruta. Karyate he avashyaha karma sarva prakriti jairgunai. That is what Gita says. And we are doing this karmendriya are employed by the human being. So we have a very good lips. If you see the human evolution, then you can see how the lips are evolved. And if we make right use of lips to be truthful, not to tell lie, if we use our eyes and show the sympathy in our eyes, if we make our voice for prayer, and if we make our hands for charity, and we make our whole face, the human head is very important, face, and for always keeping smiling, and if we keep our heart to harmonize and feel one with the others, then that is karmasu kaushalam. That it is there. We have to use it. Otherwise, man has become a selfish. And to live for the others means to become unselfish. So all others are unselfish. They are in tune with the nature. It is the only human being who is selfish, who is desiring. And that is the problem. And therefore, to live to benefit mankind is the first step. That is what HPB said. And living for others means reaching to that state. That is the feeding to the soul. Always be in that certain moments. And therefore, it is said, a thing of beauty, joy forever. Anything beauty, even face of the woman is also beautiful. The men are enjoying the women's beauty, but that moment is very one moment. Immediately the desire to possess, that comes to the lust level. This is how the human beings are caught in selfishness. So their soul is starving for such kind of joy. That is what I want to add. Very nicely, all the Triveni, all three ladies, they have contributed very nice. I enjoyed it. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yes, Hari, you have also joined today. Is there something from the young people to say? Firstly, it's such a great pleasure to hear, such great talk. At the same time, now I'm so intimidated and scared because I will be speaking next week. and now I don't know how I'll even, I and Aditya will even match, the kind of wisdom and the kind of, standards that, is being said here. But we will definitely try our best. And the thought of that you will do best is the starting of the wisdom, dear. That's what I believe in. Okay. Thank you. And yes, Harshadan Bhai. Yes, sir. Your special comments. Yes. Hello. My congratulations to MITALINI ji, first of all, and for Hindi translation and for Gujarati, both ABHA and our sister RAJESHWARI ji. This is really a wonderful talk today because it is the theosophy which is in daily life. And what we understand being the theosophist, it is not just to talk only, but to have everything in our daily behavior, in our endeavors, and in our relations with others. So here we can have Krishnaji's main point of view. We can understand the main points of the philanthropic approach of Radhaji, because in her Human Regeneration book, she also delineated the same thing.
And most probably what happens, it is not only just to live only the worldly life, but also to live the family life. If we support our family members, and if they realize that we know not only talk about theosophy, but we also put into practice, so that creates a kind of atmosphere in the household. Our very veteran theosophist, the late Harjivan Dada Mehta, we very proudly and lovingly call him Harjivan Dada. He wrote one article about theosophy in kitchen. Theosophy in kitchen. So how you serve the people, in what way you prepare the food, in what way you have the loving nature while cooking, and when you serve the food in a right way, with the care and everything in a decent way, that is theosophy, what he used to tell at that time. So serving a dish which is very normal, but to serve the food to the hungry is theosophy. So in the way we can understand this as whatever the particular things are there, it is a poetic aspect. When you sing a song, you, whether you know the meter or whether you know the particular rhythmic things, or but you are heartily singing, that creates a kind of atmosphere. When you talk to someone, it is only the talk which is not the a kind of talk which is worldly talk, but when you talk heartily, your words go directly into the hearts of the listeners. Yes. So that is the kind of theosophy. Yes. And so many other factors are there, and really we are happy today. And Mitalini ji, you touched that subject, which is remarkable today in this modern scientific age and technology. So whatever we do, let us do it from the theosophic point of view. Whatever we devour, whatever we eat, if we eat with the particular point of view, we will keep ourselves very healthy. We will avoid certain kind of fast food. We will also avoid certain kinds of speech. Sometimes our harsh words, whether we are right or wrong, we are right, but our harsh words would not have that justice. So when we use the harsh words, whatever we are right in the way, that will mar the whole impression. So this is the really the crux, the main source of this particular subject today. I am very happy. And Shindeji, namaskar. Whenever you talk in that way, I feel a kind of inspiring matter, and really it is worth that you give some of remarkable things after this Triveni meeting is over, or whatever the speeches are over, whether in Hindi or Gujarati or whatever the Indian languages are there. Really, we like to listen. Whether Odia language is there, Kannada language is there. It is really the love that binds us. If somebody is speaking in Odia, somebody is speaking in Tamil, really, Taralji, this is really my particular feeling that I am expressing here. So in that way, it is a sound that touches my heart. Maybe I can understand or may I not understand, but the thing is that whatever you say, just a thing of beauty is joy forever. It is a rhythm, it's a language, yes. So it is really, thank you so much. You touched a very good subject, because whether it is in Tamil, Malayalam, Kannada, Odia, Bengali, I receive 5 or 6 calls after say 4 or 5 meetings are over. Suddenly someone will call and say, sir, thank you, we could understand in Kannada. So people are just slowly watching whatever is there in YouTube. It's like a readily available translation of book in just you can say 1 hour 50 minutes. Thank you all of you, and I think it's time. So with your permission, we should go towards the prayer. Atulji, please go ahead. કેશવરબેન શિવમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम.
शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् Thank you, Keshwarji. Always when you chant this, it's like another world. Thank you so much. Okay, so with all permission,